Assalamu alaikum ji. Welcome to Dr. Imran's official and in today's lecture we will discuss the menstruation cycle of human female and in today's lecture we will discuss the three main phases of the human female menstruation cycle and we will also discuss the important functions of hormones secreted during the menstruation period. For example, we will discuss progesterone, we will discuss estrogens, we will discuss luteinizing hormones, and also we will discuss follicle stimulating hormones. So, before going towards the in detail, initially we will discuss the diagram. If you look at the diagram, you will see here three main phases. This is the first phase. Look at that. This one is the first phase, and this first phase is called menstruation phase, and it remains from first day to 7th day. And if we look at the second phase, that the second phase is called follicular phase, and follicular phase from 7 to 13 days approximately. And then comes ovulation phase. Ovulation phase approximately of 2 days, that are approximately 14 and 15 day of the menstruation cycle. Then the next phase is called luteal phase. Look at that, the luteal phase, the progesterone, estrogen levels are high, and the follicle stimulating hormones and luteinizing hormones levels are high. And if ovulation occurs, then they protect the pregnancy. And if ovulation don't occurs, then the level of progesterone and estrogen drops dramatically and the cycles start again. So initially we will discuss the function of each hormones that is secreted during the menstruation period. Initially, first of all, discuss LH hormone, that is luteinizing hormones. And luteinizing hormone is basically secreted by the pituitary gland, and it helps in sexual development and functioning. And the main important role is to maintain the menstruation cycle. The second hormone is called estrogen. Estrogen is basically regulates the growth and development of female reproductive system. And then comes progesterone. Progesterone is another hormone that basically develops the endometrium. And what is the endometrium? That is the innermost lining of the uterus, that is called endometrium. So the progesterone basically prepares endometrium for ovulation and pregnancy. Then comes another hormone that is called FSH, that is follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone is also secreted by the pituitary gland, and the main function of the follicle stimulating hormones is to produce eggs during the ovulation. So these are the main functions of these hormones that are secreted during the menstruation period. So now we will discuss the main phases of the menstruation cycle. The first phase is called menstruation phase, and menstruation phase starts from first day to 7th day. And during this phase, the level of progesterone and estrogens is very low. Look at that. Then comes second phase. The second phase is called basically follicular phase, and follicular phase basically starts until the ovulation. During this phase, follicular phase, the estrogen and progesterone level increases as compared to menstruation phase. And during this, pituitary gland releases follicle stimulating hormones and luteinizing hormones. If you look at this position, the follicle stimulating hormones and luteinizing hormones
are basically increasing their level at this position. So at this stage, look at this, follicle is developing here, and when follicle reaches at this position, then mature follicle ruptures and it releases the mature egg, and that mature egg will goes into the fallopian tubules and becomes ovulation and pregnancy occurs. So in this phase, one most important thing I want to discuss here. Suppose that if a human female have a menstruation cycle of approximately 28 days. So we are calculating here. So 28 days are the basic days of the normal human menses cycle, and in this 28 day we will discuss only one thing, that is this is the middle of the cycle, that is about 13 to 14 or 15 day. 13 and 14 day of the cycle are very important regarding to the ovulation, and ovum releases during these days and pregnancy occurs. So this is a very important phase regarding to the ovulation. After then, the next phase is called luteal phase, and luteal phase is also very important. During um, this phase, estrogen and progesterone levels drops. When drops? It drops only at the time if ovulation occurs. If ovulation don't occur, then the estrogen and progesterone level never drops. But if the ovulation occurs during ovulation phase 13 to 14 day, then they definitely will drops. And here you will see corpus luteum is developing here, and corpus luteum basically protect the pregnancy and support the pregnancy. And if pregnancy does not occur, then the corpus luteum locating here is ruptured and breaks down. So this phase is called basically a luteal phase of the menstruation cycle. Now we come to the last phase. Look at this. This is the last phase of the menstruation cycle, and it's this last phase you will look at this, that the progesterone level and estrogen levels decreases dramatically. And when estrogen and progesterone levels decreases dramatically, then menstruation cycles begins again and it will recycle again. So this is all about the menstruation cycle and their phases, and in next lecture we will discuss another lecture inshallah. अच्छा, नाउ हम डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इन डिटेल में. और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को देखा जाए तो बेसिकली अगर इसको हम डिफाइन करें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेसिकली मोर देन जस्ट अ पीरियड्स, बेसिकली ये पीरियड से मोर देन क्या चीज़ है इसमें, क्योंकि ऑल एक्टिविटीज़ जो है ब्रेन से रिलेटेड, ओवरीज से रिलेटेड, और इसमें जितने हार्मोन्स हैं वो खारिज होते हैं और बेसिकली वही सारा फंक्शन कर रहे होते हैं. अब बेसिकली तो अगर देखा जाए तो अगर हम इसके फेजेस को सबसे पहले डिवाइड करेंगे कि किस किस फेज़ में डिवाइड किया जाता है, फिर इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. तो बिफोर गोइंग अगर हम डायग्राम की तरफ जाएं तो उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है इसके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. और इनका क्या क्या फंक्शन है बेसिकली देखा जाए, अगर LH जो हार्मोन्स हैं जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है बेसिकली ये सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड.
जो कि दिमाग की बिल्कुल बेस के पास पाया जाता है। और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड LH हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, तो जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स है ये बेसिकली सेक्सुअल फंक्शन को बेहतर करता है, और इसके अलावा जो सेक्सुअल डेवलपमेंट्स होती हैं उनको बेहतर करता है। और तीसरे नंबर पे जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। बेसिकली अगर इसकी इरेगुलरिटी होगी, अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो मेंसेस इरेगुलर होने का खतरा होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखें तो हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन आ जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली क्या करते हैं, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि एस्ट्रोजन बेसिकली क्या करेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डेवलप करेंगे और रेगुलेट करने में हेल्प आउट करेंगे। फिर उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन आ जाता है हार्मोन, ये भी हार्मोन है। और ये प्रोजेस्ट्रॉन बेसिकली इसका क्या फंक्शन है, जो एंडोमेट्रियम है बेसिकली उसको प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। ये इनके ब्रेन की तरफ से, पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से ये सिक्रीट होता है, और फिर जैसी उसको मैसेजिंग आती है कि प्रेगनेंसी डेवलप होती है तो उसको मैसेजिंग आती है, और वो फिर बेसिकली जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है बेसिकली यूट्रस की, उसको प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए और ओवुलेशन के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बेसिकली ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बेसिकली ये प्रोडक्शन ऑफ एग, यानी कि एग को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। और अब अगर हम देखें इसके फेजेस को, अगर हम देख लें, अगर गौर से देखें तो ये जो पहला फेज़ है फ्रॉम 1 डे टू 7 डे, यानी कि पहले दिन से लेकर जो 7वें दिन का जो फेज़ है इसको हम मेंस्ट्रुएशन फेज़ कहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन फेज़ का जो है इसमें अगर देखें तो इनिशियली आप देखें कि ये दो ग्राफ्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो ब्लू वाला है ये बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन है, और जो रेड वाली लाइन है ये शो कर रही है एस्ट्रोजन को। तो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन जो है ये दोनों का जो लेवल होता है वो बेसिकली ड्रॉप हुआ होता है, बिल्कुल इन दोनों की जो सिक्रीशन का लेवल होता है वो बिल्कुल नीचे गया होता है जो मेंस्ट्रुएशन फेज है इसमें। उसके बाद सेकंड जो फेज़ आपको नज़र आ रहा है ये फ्रॉम द 7 डेज से लेकर 13 डेज तक आप कह सकते हैं इसको, ये बेसिकली फॉलिक्यूलर फेज़ कहलाता है। और जो फॉलिक्यूलर फेज़ है वो बेसिकली स्टार्ट कब तक, कहाँ तक जाता है, अनटिल ओवुलेशन। जब तक ओवुलेशन नहीं होगी तो ये बेसिकली फॉलिक्यूलर स्टेज जाएगी वहाँ तक। फॉलिक्यूलर स्टेज में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जब ये दोनों का लेवल हाई होता है तो उस टाइम जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। और फिर जो फॉलिकल ओवुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है वो ओवरी को मैसेज देता है किसका, प्रिपेयर एग फॉर ओवुलेशन। तो ये बेसिकली ओवरीज को मैसेज देता है कि अब ओवम खारिज होने लगा है और अब ओवुलेशन का टाइम आ गया, तो ओवुलेशन होनी है बेसिकली। उसके बाद जो 13 टू 14 डेज़ है, यानी कि जो बेसिकली 13 और 14 वाला जो डे है ये बेसिकली ओवुलेशन फेज भी इसको आप कह सकते हैं। और इस पे जैसे कि मैंने पहले इसमें बताया था कि जो लाइन आपको नज़र आ रही है बेसिकली इसमें ये होता है कि सपोज के जो ह्यूमन फेज़ है, जो मेंस्ट्रुएशन फेज़ है ह्यूमन फीमेल का, अगर लेट्स सपोज कि वो 28 डेज़ का है और उसको हम मिड में डिवाइड करें तो 13 और 14 डे होगा। बेसिकली वो एक ऐसे 2 डेज होंगे जिसमें 90% चांसेस जो है ओवुलेशन के, प्रेगनेंसी के इंक्रीज हो जाते हैं एट दैट टाइम। फिर उसके बाद हमारे पास जो फेज़ आता है इसको हम ल्यूटल फेज़ कहते हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज़ होते हैं, और बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ओवुलेशन अकर हो जाए, यानी कि ये बेसिकली 17वां 18वां 19वां जो दिन होता है साइकिल का, ये वो फेज़ होता है जिसको हम ल्यूटल फेज़ कहते हैं। और ल्यूटल फेज़ में अगर तो इन केस ओवुलेशन हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए,
तो फिर तो ये जो बेसिकली एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बेसिकली ड्रॉप हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे फिर एक और क्या चीज़ होगी, इसके साथ ही यहाँ पे यहाँ पे देखें आप, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना बेसिकली डेवलप होना शुरू हो गया है। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा तो इनकेस प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। अगर तो प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो एस्ट्रोजन होगा उसका लेवल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और साथ ही कार्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। और कार्पस ल्यूटियम जब सिक्रीट होगा तो फिर वो क्या करेगा, बेसिकली ब्रस्ट करेगा। कार्पस ल्यूटियम बेसिकली क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को हेल्प आउट करेगा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए। और अगर इन केस प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हम आ जाते हैं लास्ट फेज़ की तरफ। लास्ट फेज़ जो है, लास्ट फेज़ में क्या होता है कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं कि बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब बिल्कुल नीचे आ जाता है तो वो बेसिकली साइकिल का रीस्टार्ट होता है, बेसिकली रीस्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, और फिर से दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फिर एक और इसमें एक कंडीशन है जिसको हम मेनोपॉज स्टेज कहते हैं। और मेनोपॉज स्टेज जो है ना बेसिकली 48 to 50 ईयर या 50 to 52 ईयर पे जब फीमेल पहुंचती है तो बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है नेचुरली वो बंद हो जाता है, और इस जो प्रोसेस है इसको हम मेनोपॉज स्टेज कहते हैं। तो ये तो बेसिकली सारा आज था। इसमें हमारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, इसमें हमने सारी जो चीज़ें डिस्कस की हैं बेसिक, अगर आप इसमें देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हार्मोन्स का है। अब देखें कि अगर तो यहाँ पे ये जो ग्राफ शो किया गया है इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का देखें आप, अब शुरू में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल नीचे चला जाता है। फिर जब ओवुलेशन के करीब पहुंचता है साइकिल तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो फिर इंक्रीज कर जाते हैं। और फिर यहाँ पे फेज एक और आ जाता है कि अगर ओवुलेशन अकर हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, तो फिर ये लेवल ड्रॉप हो जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। अगर इनकेस प्रेगनेंसी नहीं होती तो इसका लेवल फिर ऊपर चला जाएगा, और फिर जब लास्ट फेज में लेवल इसका नीचे आएगा तो दोबारा से साइकिल जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।